8 बज गए इंशाल्लाह। $49 miles है, लेकिन ड्राइविंग डिस्टेंस जो है ना वो है 65 miles, hour and a half। 9:20 पे आप होगी। कौन आ गया? हाँ? कौन आ गया? National symbol since it was put on the Great Seal of the U.S. in 1782. It's never been specifically designated as the national bird under U.S. law. Who knew? The Hill reports the effort to enshrine the bald eagle's national bird status was led by a Minnesota-based center called the National Eagles Center. Minnesota's Senator Amy Klobuchar says her state is has one of the largest populations of bald eagles in the country. Sports at 25 and 55, powered by Maximus, moving people and technology forward. Bald eagle was a good choice. Didn't Ben Franklin want like a turkey or something? He wanted a turkey. Yeah. I think it's a poor choice. Well, it sustains you during the holidays. I think he had it. Not very majestic. The Capitals fall in Dallas 3-1 as the power play that had been producing as of late goes 0 for 4. Defenseman Jacob Chikrin. Yeah, power play. Unfortunately, we didn't execute as well as we would have liked. And yeah, I think that was probably one of the deciding factors tonight. I think, if we can capitalize on one of those, it makes a different game. But I think power play's been pretty good of late. And tonight we just didn't have our best. The road winning streak ends at 10. NFL's Monday Night Football delivered a staggered doubleheader. Minnesota moves into a first-place tie in the NFC North by beating Chicago. Atlanta holds off a late Las Vegas drive to beat the Raiders. They stay on the fringe of wild-card contention, 2 games behind the Commanders. Burgundy and Gold battle Philadelphia in 5 days. Baseball, ESPN reporting the Orioles have agreed to a free agent contract with Japanese pitcher Tomoyuki Sugano. 1 year, $13 million. College football, former Maryland quarterback Billy Edwards Jr. posts on X that he is transferring to Wisconsin. He gets to keep a red jersey because they wear the same colors. Terps running back Roman Hemby plans to enter the portal. Dave Preston, WTOP Sports. Coming up on WTOP, the very latest on another school shooting in America. This one reportedly involving traffic and weather in 60 seconds. Get the Honda of your dreams during Happy Honda Days. Whether it's a rugged new Passport, Pilot with available all-wheel drive, or powerful Ridgeline, turn your dream Honda into reality during Happy Honda Days. For a limited time, well-qualified buyers can get a 1.9% APR on a 2025 Honda Passport and a 2.9% APR on a 2025 Pilot or Ridgeline. See dealer for financing details. GW Hospital is committed to providing high-quality care, advanced technology, and world-class service to our patients. We've got you covered, from routine care to the clinical trials we offer as an academic medical center. GW Hospital has what it takes to meet the healthcare needs of our diverse community in the DMV. Find us in the heart of DC, steps away from buses, metro, and parking garages. Let our family care for you and yours. To find a doctor, call 888-4GW-DOCS or visit doctors.gwhospital.com. Physicians are not employees or agents of this hospital. This is WTOP News. WTOP FM Washington. WWWTFM Manassas. WTOP FM Braddock Heights, Frederick. Weather on the 8th. Here's Rita. And let's start out in Virginia on eastbound 66. That is the delay out of Gainesville near 29, headed past 234 business with the crash on the left side of the roadway. Now, the westbound side, the delays have completely eased. You may find that crash cleared westbound before 234 business. Keep an eye out along the right side in case there's anything left over to look at. Now, inside the Beltway, westbound 66 is slow near
Courthouse through Arlington, trying to make your way into Falls Church with your lanes available to you. We're also still seeing some volume right now on the George Washington Parkway if you're trying to head northbound coming from the Roosevelt Bridge, trying to make your way past that and toward the scenic overlook. So just keep an eye out for anything there outside of the normal work crew. You're also going to see in Maryland, westbound I-70 before 32, the crash cleanup. It is gone, and thankfully the delays are easing as well. You do have a little bit of volume approaching where the crash was, nowhere near as bad as it had been. You'll also find on the Beltway the outer loop delay headed toward the Woodrow Wilson Bridge in Virginia. Off and on the outer loop headed past Van Dorn Street. Then you're going to find it slow before Telegraph headed to Route 1 in Alexandria, and then you get across the bridge. The WTOP Traffic Center is presented by Window Nation. Buy 2 windows, get 2 free. Visit windownation.com. I'm Rita Kessler, WTOP Traffic. Now to 7 News First Alert meteorologist Brian Vandegraff. Still with the clouds for you this morning. You're going to see some clearing of the skies and some milder temperatures. In fact, we're looking at 60s this afternoon, putting us well above the average of 48. Enjoy. Get out and soak it up. Tomorrow some changes. So first overnight, back in the 30s with clouds. Showers will develop at some point through your Wednesday, pretty late morning, midday, moving in from west to east. And temperatures in the 50s, not bad, but we'll feel cool with that rain. Then the really chilly air starts to spill in for the latter half of the week. We're back in the 40s with sunshine for Thursday. I'm 7 News Senior Meteorologist Brian Vandegraff in the First Alert Weather Center. 51 degrees at the wharf in D.C. This is WTOP News. Facts matter. This hour of news is brought to you by Lido Pizza. Lido Pizza never cuts corners. Good morning, I'm Michelle Bash. And I'm John Aaron. Coming up, A young girl was shot by her younger brother, police. Our bill giving D.C. control of the RFK Stadium site is now getting tied to a broad spending bill in Congress. I'm Nick Einelli. Ukraine claims responsibility for a bomb blast that killed a senior Russian general and his aide in Moscow. Tips only you can do to keep your Christmas tree looking fresh. I'm Juan Herrera. 8 o'clock. This is CBS News on the Hour, sponsored by Progressive Insurance. I'm Deborah Rodriguez. Police in Wisconsin say it was a 15-year-old girl who opened fire at a small Christian school in Madison, killing a substitute teacher, a classmate, and wounding 6 others before she turned the gun on herself. Second grader Nora Gottschalk was stunned. There was a teacher, and she was screaming like, my leg, help! I'm Peter King. Police say the shooter's family is cooperating with investigators as they look through items they seized from the home. Chief Sean Barnes tells CBS Mornings that social media has been full of posts about possible motives. We'll look through her social media, talk to some of her friends, and really try to piece together how a 15-year-old was able to do something like this. As to where the girl got the gun, Barnes says ATF is tracing its path, and he hopes to have more information later today. Police say a second grader called 911 to report the shooting. A Trump spokesman calls the decision by a New York judge not to throw out the president-elect's hush money conviction a direct violation of the Supreme Court's ruling on presidential immunity. Legal analyst Thane Rosenbaum. With this decision, Judge Merchan is preserving his prerogative to sentence Donald Trump for the falsification of business records after Trump serves his 4-year term in the White House. But Trump's lawyers will appeal and argue that the jury heard evidence of conversations that took place in the Oval Office. ByteDance, the Chinese company that owns TikTok, is asking the Supreme Court to stage an emergency intervention to prevent a ban on the platform in the U.S. next month. Tech contributor Ian Scher. This case is teeing up what could be one of the biggest First Amendment questions that we have faced in years. Ukraine claims responsibility for the death of a top Russian defense official today. CBS's Vicky Barker. This was the latest Ukrainian attack on a Russian target inside Russia, and by far the most audacious. General Igor Kirillov, the head of Russia's nuclear and chemical warfare division, was killed by a bomb planted in an e-scooter as he left a Moscow apartment building. Los Angeles County is suing the owner of Chiquita Canyon landfill for not stopping a rare high-temperature chemical reaction that's been cooking garbage and getting people sick. New additions to the National Film Registry. Star Trek II and Beverly Hills Cop are among this year's 25 movies selected by the Library of Congress. Let's do rap together. Yo, baby, yo, baby. Dirty Dancing makes the cut, too. Nobody puts baby into Films are selected based on historical, cultural, and aesthetic contributions. This is CBS News. Sponsored by Progressive Insurance.
Insurance. Looking for a career path with flexibility, great pay, and benefits? Go to progressive.com/careers and apply online today. It's 8:03 on Tuesday, December 17th. We're at 50 degrees, very mild today. Brightening skies, highs could reach 65. And I'm John Aaron. The top local story we're following this hour. A 5-year-old girl is in critical condition after police say she was shot by her even younger brother. WTOP's Luke Luker tells us 2 people have now been arrested. DC Police Chief Pamela Smith says they believe the gun had been left within reach of the roughly 3-year-old boy, then shot and his sister. She was transported to the hospital from the Galveston Street southwest apartment around 6 a.m. He was asked to watch the kids while the mother was running the transport. He was charged with 14 children. The sister of the 2 kids was also arrested for assaulting a special police officer. There's an expectation that we are to keep our firearms locked up, and especially away from our children. New information this morning on a bill in Congress that would give DC control of the federally owned RFK Stadium site. It's expected to be tacked down to a broader spending bill that has to be passed by the end of this week in order to avoid a government shutdown before the holidays. WTOP's Nick Iannelli talked about it with DC's mayor. On Capitol Hill, there are a lot of issues, not just ours, that I know that they're grappling with. But DC Mayor Linda Ramsey says she hopes the bill passes by the end of this week. If DC gets control of the RFK Stadium site, the city could redevelop the area, and it would be viewed as a major advantage for DC. Potentially to move there. Says taking the bill. The bill will snacks in Congress as Maryland lawmakers who'd like to keep the commanders in their states have been reluctant to support the bill. Give them the benefit of the doubt that we're all working in good faith to do what's right for both of our jurisdictions in the region. In the district, Nick Iannelli, WTOP News. There are new honors for some of our favorite movies. WTOP's Neil Augenstein has this year's list of films that are being preserved in the Library of Congress. 1987's Dirty Dancing, starring Patrick Swayze and Jennifer Grey, is one of this year's 25 films joining the National Film Registry. For the past 36 years, the Librarian of Congress has selected movies deemed to be, quote, culturally, historically, or aesthetically significant. This year's movies range from James Cagney's Angels with Dirty Faces to Texas Chainsaw Massacre to Eddie Murphy's first film on the list, Beverly Hills Cop. You know, this is the cleanest and nicest police car I've ever been in my life. This thing's nice in my apartment. For this year's films, the National Film Registry now includes 900 titles. Neil Augenstein, WTOP News. Do you have a real Christmas tree in your home this year? Boy, there really is nothing like that smell, right? WTOP's Juan Herrera spoke to an expert for tips on how to take care of it. Everyone loves having a real Christmas tree for the holidays. While having one of these trees in your home looks great, keeping it looking fresh throughout the holiday season can be a real challenge. The key is getting it in water as soon as possible. Some people think, oh, I've got my fresh cut, I don't need to put up my tree for a couple days. No, you need to get it in water right away. That's Beth Bossio, the manager of Corner Pine Tree Farm in Smithfield, Pennsylvania. Once your tree is up, Bossio says it's important to keep it away from heat sources. You don't want to open a near vent that can dry it out. And try to keep it away from anything that's going to dry out your tree, like a fireplace. She says following these directions will help keep the leaves on the tree for a good while. You should be able to keep it into the new year. WTOP in Money News. Who likes to shop at the mall these days? You might be surprised. Traffic and weather in 30 seconds. At ICF, an industry on projects that create positive change in communities nationwide. Whether it's powering energy innovation, advancing health outcomes, or leveraging technology and AI for mission success, we work with clients to tackle their most complex challenges head-on. Our data-driven solutions are designed to deliver results faster and help organizations move forward with confidence. Let's build a more resilient world. Visit ICF.com. That's ICF.com. It's 8:08.
Michael and Son's heating tune-up for only $69. Michael and Son. Traffic and weather on the 8s and when it breaks. Rita Kessler in the WTOP Traffic Center. And let's update the situation in Maryland. Westbound Maryland 200, the Intercounty Connector before Shady Grove Road. That crash is cleared. Your lanes are open. We're still seeing a little bit of volume as you approach that area. And then it looks good headed toward 370. We are seeing delays on southbound 270 approaching and passing Father Hurley Boulevard toward 118. There was a crash reported as northbound 270 near Shady Grove Road. We are seeing a delay southbound in that direction. So just keep an eye out in either direction of 270 in the area of Shady Grove Road for the crash. You'll also find in Arnold, northbound Route 2, Ritchie Highway near College Parkway. That crash did have you under police direction at one point. Looking at the Beltway, southbound 95 slows near 212, getting onto the inner loop toward Route 1 in College Park, or onto the outer loop all the way around toward Georgia Avenue. A little bit of a delay on the inner loop near Georgia Avenue, so watch out in case anything has happened there. Inner loop delays to the Woodrow Wilson Bridge or before St. Barnabas Road, headed toward the bridge or onto northbound I-295 into Blue Plains. Outer loop delays are easing nicely headed toward the Woodrow Wilson Bridge. Still a little volume approaching Van Dorn Street and approaching Teller. Getting onto the bridge now with your lanes open from that earlier wreck. Now in Virginia, eastbound 66 is still solid out of Gainesville, headed through Manassas after 234 business. Sudley Road, the left side of the roadway had been blocked with the wreck. Westbound, the delays are easing. There's still some activity on the right side on westbound 66, but again, not seeing as big of a backup. There's definitely less volume on the westbound side than the eastbound side at this time of morning, but inside the Beltway is where you see the delay westbound coming out of Arlington into Falls Church. But your lane should be open. Checking DC 295, southbound delays off of Kenilworth, off the BW Parkway, trying to make your way toward Pennsylvania Avenue. Inbound Suitland Parkway is now solid from Silver Hill Road to the light at Stanton Road, and as you approach 295 and the Douglas Bridge. Check out the Genesis GV70 EV with electrifying elegance and shocking incentives, including $18,000 to $500 in lease cash. Charging to Genesis of Rockville and Gaithersburg at fitzmall.com. I'm Rita Kessler, WTOP Traffic. And here's 7 News First Alert meteorologist Brian Vandegraff. Perfect day of the week. After morning clouds, we'll get some sunshine and temperatures low to mid-60s. We'll be flirting with that record of 65 set back in 2021. Now, into the evening, some scattered clouds. Temperatures will be dropping back through the 30s. Tomorrow, overcast skies. Looking for highs in the 50s. Some showers develop in midday and afternoon. This post will draw in some cooler air. Temperatures in the 40s for Thursday, Friday. The second cold front comes through on Friday. Maybe a sprinkle flurry by the weekend. मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये एक तरह का इन्होंने बनाया हुआ है कि डिफरेंशिएट करने के लिए. We are not in the 60s yet, but we're in the 50s. 52 in Laurel and in Farragut Square. 53 in Springfield. Brought to you by Long Fence. Save 25% on decks, pavers, and fences. 6 months, no payment, no interest. Conditions apply. Go to longfence.com. मैं पार्सल डिलीवरी का काम करता था जब मैंने आया था डीसी में मैं एक दो ड्रॉप करने आया पैकेट्स तो मैंने गाड़ी पार्क की तो मैं फटाफट जाके जो पैकेट ड्रॉप करना था वो करके आया तो बाहर पुलिस वाले टिकट मैं कहा फॉर व्हाट Chinese apps TikTok and this is diplomats and 12th on the list respectively. Parking but the future of all three here in the US is लिखा तो नहीं हुआ उसने दूर मुझे जहाँ सेंटर होते हैं ना रोड वहाँ पे दिखाया बोर्ड लगा था डिप्लोमेट्स पार्किंग स्पॉट यहाँ है तो वो बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है तो मैंने कहा पार्क कर दिए 2 मिनट तो क्या हो क्या मत for holiday shopping again this year. WTOP Business says the biggest fans of shopping centers may be younger shoppers. The International Council of Shopping Centers says 63% of Gen Zers prefer shopping at physical retail stores more than any other generation other than baby boomers. Top reasons. जैसे लोग उधर पार्किंग करते हैं अंकल आमिर की कहानी सुनो डीसी में ज़्यादा इन आउट करते थे ना अभी भी करते हैं कि कितनी सिली रीजंस पे आपको पार्किंग टिकट मांगनी है Pure Talk gives you unlimited talk, text, and data for just $25 a month on their 5G network. Dial pound 250 and say keyword switch now to save 50% off your first month. Coming up, what happens now if the New York judge will toss out the hush money conviction for President Trump? तो यही है पोर्शन तो फिर आगे जब 95 को चलेंगे True Vitality Medical Center gets your love life back in just one visit.
knows it. Their painless breakthrough medical treatments eliminate ED and PE. Here's a specialist in men's health. I'm Dr. Simovitz at Viagra, Cialis, laying down. True Vitality Medical Center offers the most effective treatments that eliminate ED and PE with men lasting longer than ever. Patients see instant results on their first visit. True Vitality Medical Center's breakthrough treatments restore your love life regardless of age or medical history. Your consultation and first treatment are free. Plus, you'll see instant results in the office. Plus, qualified patients get their testosterone checked free. Call 703-637-1166 to regain your love life in just one visit. Call now. 703-637-1166. We just want to have enough money for retirement. And travel to visit our grandchildren. I understand. That's why at Fisher Investments, we start by getting to know each other, so I can learn about your family, lifestyle, goals and needs, allowing us to tailor your portfolio. What about commission-based products? We don't sell those. We're a fiduciary, obligated to act in your best interest. So how do you manage your fees? बेटा नहीं ये नहीं मार करते मेरा ख्याल है शायद नीचे लिखा हो नेम ऑफ द कंट्री नेम ऑफ द कंट्री मैटर क्योंकि डिप्लोमेट है तो डिप्लोमेट है What other services do you offer? As a client, you have access to resources on investing, financial planning, estate planning, social security, Medicare, and more. आमतौर पे ऐसी गाड़ियाँ जो होती हैं ना वो एम्बेसी At Fisher Investments, we're clearly different. Learn more at FisherInvestments.com. जैसे फ्लीट के हिसाब से नंबर प्लेट्स दी होती हैं. Coming up, parents are invited to a meeting tonight to discuss a racist incident that happened in a local school. More from WTOP in 30 seconds. Here are the top questions from homeowners in the new year. Can my roof survive another winter? And can my bank account survive if my roof doesn't? Trust PJ Fitzpatrick for the answer. Roofing done right the first time. And roofing priced like it was last year. That's right. To keep their crews working this winter, PJ Fitzpatrick will set all prices back a year and guarantee your estimate for all of 2025. Plus, they guarantee their work for the life of your roof. Visit trustpj.com to schedule your free consultation and price lock guarantee. The WTOP app has all kinds of handy new features. Like a feedback tool, so you can send us your newsworthy photos, videos, and messages. Then you'd be a reporter too. Welcome to the WTOP team. Download it wherever you get your apps. Brought to you by Navy Federal Credit Union. Our members are the mission. Visit NavyFederal.org. Issued by NCUA. This is WTOP News. Facts matter. 8:15, I'm John Aaron. I'm Michelle Bash. The family of a second child hit and killed by a transport van near Riverdale Elementary School last year is suing Prince George's County. WTOP's Ellen Etter reports. 5-year-old Sky Sosa and 10-year-old Shalom Mba were killed last November when a van driven by Olga Lugo Jimenez ran into them while they were in the crosswalk. In the wrongful death lawsuit, the family of Sky Sosa contends because there was no crossing guard, this led to a dangerous condition where this tragedy could occur. It also says it took roughly 30 minutes for first responders to arrive. The suit names Prince George's County, Fire and EMS, Board of Education, and 2 private individuals, including Jimenez, as contributing to the children's deaths. Back in June, Jimenez was indicted on charges of criminally negligent manslaughter while operating a motor vehicle. The family of Shalom Mba has already brought a suit against the county. Christian Hudson, an attorney for Sky's mother, Laura Palacios, wants justice for the boy. But we also want to make sure that the county does not allow a situation like this to happen again. Alan Etter, WTOP News. Families of students at Newton High School in Rockville are invited to a meeting tonight to discuss the school's response to a racist incident. On December 2nd, someone wrote the N-word on the desk of a black student at the school. The parents weren't notified until 4 days later. A demand an apology from the school superintendent and Newton's principal was temporarily replaced. Our partners at 7 News report both the school's superintendent and acting principal are expected to attend tonight's meeting. It's set for 7 p.m. in the school auditorium. Some legal troubles continue for President-elect Trump. Yesterday, New York Judge Ron Merchan ruled that Trump's felony convictions should not be tossed out. He was found guilty in May on 34 counts of falsifying business records and interfering with the 2016 election through so-called hush money payments to cover up an affair and suppress negative media coverage. Trump and his legal team have tried to get the verdict dismissed, citing the recent ruling on presidential immunity by the Supreme Court. CBS News legal contributor Jessica Levinson. Trump's argument
was that based on the Supreme Court's immunity decision that he could escape legal liability. Under the Supreme Court decision, Trump could only escape liability if the acts that formed the basis of the conviction could be considered official acts. The prosecution's whole theory of the case is that Donald Trump was acting as candidate Trump, not President Trump. So far, the judge has not scheduled a sentencing date for Trump. These local top stories we're working on at WTOP. 2 adults are under arrest after police say a little boy around 3 years old shot his 5-year-old sister. A bomb kills the head of Russia's nuclear forces in Moscow, and Ukraine claims responsibility. And we have an update on a bill that would allow D.C. to take control of the RFK Stadium site. Keep it here for full details on these stories in the minutes ahead. 8:18. Traffic and weather on the 8th. Here's Rita. And thanks to College for letting us know what's going on the top side of the Beltway. The problem is on the inner loop at the exit for Georgia Avenue. A box truck reportedly on fire or having some sort of fire activity inside the truck along the right side of the roadway. So your delays are now after 355 headed around toward Georgia, but the rubbernecking begins on the outer loop near 95. Headed to that point as well. Lanes are open on the inner loop. Southbound 95 near 212 on the toward Route 1 College Park. And then delays from St. Margaret's Road headed on to North. One loop is going this way, one loop is going this way, right? तो ये वाले को कहेंगे inner loop, ये वाले को कहेंगे outer loop, right? देखो outer loop heavy है, inner loop this time of the day. And then a delay from 66 headed past the Dulles Toll Road. You're also going to find on eastbound 66 that is solid backup out of Gainesville, heading past 234 Business in Manassas, where we still have the wreck along the left side. Earlier crash in Maryland westbound Intercounty connector before Shady Grove Road. That crash cleared. Lanes are open. The delays should have eased nicely. It is 270 in the area of 28 in Rockville. That had been a report of a crash. Seeing more volume southbound, not really seeing much of a delay northbound, but they were looking for it in both directions. You'll also find in Arnold northbound Route 2 Ritchie Highway near College Parkway earlier. You were under police direction for the crash. When was the last time you went into a bank? With Eagle Bank, you can secure competitive rates for personal high-yield savings accounts and CD and money market accounts for business or personal. Eagle Bank, member FDIC. I'm Rita Kessler, WTOP Traffic. News first to get meteorologist Eileen Whalen this morning is not much of a looker, but the temperatures certainly won't bad if you have to be outside today. People from outside are coming to work at this. Just went and got a cup of coffee and just fine. It is kind of like a little dreary and dark still, but we are going to see skies bright. And as the skies brighten, the temperatures are going to climb into the 60s here on this Tuesday, flirting with record highs. The record high at Reagan National is 65 degrees set back in 2021. So just going to take a little while for these skies to brighten, but we eventually will get there, and we will be dry heading into the evening hours as well. Temperatures overnight tonight are going to fall into the 30s, so it will be colder tomorrow morning. Tomorrow, highs in the 50s, so we will see a chance for showers tomorrow, especially heading into the lunch hour through the afternoon and evening. On and off rain showers, about 1/4 inch of rain with your Wednesday weather maker. Thursday and Friday, we're dry. We'll have colder mornings in the 30s and afternoon highs in the 40s, and then pushing even colder air arrives for the upcoming weekend. It's the first weekend of winter. The solstice occurs on Saturday. Saturday's high 38, 33 your high temperature on Sunday, and we're also going to be dealing with some very low temperatures Sunday and Monday mornings. We'll have temperatures in the teens, so some colder air on the way, but right now temperatures very mild. In fact, right now we're sitting at 49 degrees outside of our studio here in Arlington. We're sitting at 51 right now in Upper Marlboro and 52 downtown. It's brought to you by Lednor Home, roofing and gutter year-end sale. 50% off installation, 0% interest up to 5 years. Terms apply. Visit lednorhome.com. Coming up, some local doctors threaten to strike. We'll tell you what's happened. More news in 90 seconds. It's time to go bowling. As a North Carolina college football rivalry comes to the National Capital Region, the 2024 Go Bowling Military Bowl matches NC State against East Carolina on Saturday, December 28th at Navy Marine Corps Memorial Stadium in Annapolis. Bring the family to enjoy the charm of Maryland's historic capital city and show your support for active duty and veteran service members. Get your tickets now at militaryball.org. That's militaryball.org. The following is a paid message. This is Bishop Michael Burridge of the Catholic Diocese of Arlington.
is there to provide us comfort and consolation, to love and to heal and forgive us. The one whose birth we celebrate anew is the one alone who can give us the peace for which we long. In him, we have every reason to rejoice always. This is Washington's news, traffic, and weather station, WTOP. WTOP News. 824. Doctors will not be walking off the job today at George Washington University Hospital. A tentative deal has been reached to avoid a strike by resident doctors. The deal reportedly includes salary increases, an annual stipend of $1,000 for mental health, and a $4,000 bonus residents will get when they ratify the contract. Residents will also get 4 weeks of vacation. The workout for doctors was still set to start today. January 19th. Former federal prosecutor Lori Levinson knocks out the case. The circuit court has held that in fact a law on his class that said that even has to be sold out and not be used as a platform in the United States is being challenged. And it's being challenged by TikTok as violating the First Amendment rights of 170 million Americans who use TikTok. President-elect Trump is set to meet with TikTok's CEO on Monday. Sports at 25 and 55. Brought to you by Momentum, advanced engineering and technology. Dylan Strom scores in defeat capture in Chicago this evening. NFL's Monday Night Football gave us 2 games. Minnesota topping Chicago 30-12. The Vikings have won 7 straight. Bears have lost 8 in a row. Atlanta. मार्का शाम में शुरू होने वाला और इसमें किसका नुकसान होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात है जो तुर्की के साथ अपील करने के लिए जा रहे हैं, अर्दोगान को शायद अंदाज़ा नहीं है कि उसने आग में हाथ डाल लिया क्योंकि अब जो लड़ाई होने वाली है इसीलिए हुआ कि अर्दोगान ने इस फोर्सेस को हुक्म जारी किया है तमाम की तमाम तुर्की की जो फोर्सेस हैं वो इस वक्त शाम में दाखिल हो रही हैं। मलेशिया जो ख़ास तौर पर ये जुलानी और बाकी सारे जो छोटे मोटे ग्रुप्स हैं जिनका अलकायदा दाइश वगैरह सबसे ताल्लुक है ये मलेशिया और इसके साथ साथ तुर्की की फोर्सेस ये करने जा रहे हैं अब ग्रैंड ऑपरेशन से मुराद ये है कि समझ लें कि बड़े पैमाने पर अब एक जंग होने वाली है तुर्की की और कुर्दों की। तुर्की की एयरफोर्स जाएगी, तुर्की की फौजें जाएंगी, मलेशिया जाएंगी, ये सारे मिलकर कुर्दों के खिलाफ करने जा रहे हैं। प्लान ये है कि कुर्दों को मुकम्मल तौर पर सफाया करना। अब हुआ क्या है कि कुर्दों के जो लीडर हैं उन्होंने ट्रम्प को भेजा है पैगाम जरा समझ ली क्या है, बड़ा खतरनाक। उन्होंने कहा है कि आप अर्दोगान को रोकें। अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर अर्दोगान ने यहाँ पर ऑपरेशन करने की कोशिश की तो तुर्की को वो भयानक नताइज भुगतना पड़ेंगे जो पिछली 100 साल तारीख में उसके साथ नहीं हुआ वो अब हम कर देंगे। और शायद उसको अंदाज़ा नहीं है कि वो कितना ख़तरनाक काम करने के लिए जा रहे हैं। हम पर हमला हुआ तो आप उसको वार्न कर दें। उसने कहा पहले तो आप उसको रोकें। उसका अगर हम पर हमला हुआ तो फिर तुर्की के साथ जो होगा ना उसको अमेरिका बचा पाएगा ना नेटो बचा पाएगा, फिर हम अपनी तमाम हदें क्रॉस कर जाएंगे। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि इस सारी सूरत हाल में प्लान क्या है। तुर्की यहाँ पर तुर्की ने अर्दोगान ने कह दिया कि जो मर्जी हो जाए मुझे इस बात का कोई लेना देना, मैंने काम करना। तुर्की ये चाह रहा है हम करें यहाँ पर ऑपरेशन और इसके बाद हमारे पास मुकम्मल तौर पर शाम के इलाके आ जाए। यानी बहुत सारे इलाके ये कुर्दों के पास जो हैं वो चाह रहे हैं कि हम किसी तरह इसको तुर्की का हिस्सा बना लें, कुर्दों को ख़त्म करें और आगे बढ़ें। क्योंकि ये बात अच्छी तरह पता है अर्दोगान को कि कुर्दों को इजराइल भी बैक कर रहा है और अमेरिका भी बैक कर रहा है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि आप इनको शिकस्त दे सकें। अब वो ये समझ रहे हैं कि जुलानी और ये सारे आपस में जब ये लड़ाई करेंगे तो मेरे लिए काम करेंगे। उधर आप देखिए बड़ी डेवलपमेंट क्या हो रही है। इजराइल ये प्लान कर रहा है कि इनको लड़ने दे आपस में, ये जंग जब करेंगे तो मैं 2 काम करने के लिए जा रहा हूँ। नंबर 1
एक तो मैं शाम के इलाके फतह करता जाऊंगा, ये आपस की लड़ाई होगी। नंबर 2, वो तुर्की के पावर प्लांट पर हमला करने की तैयारी करें। अब इसमें मीडिया ने ऑलरेडी कैंपेन बना दी, हवा बनाना शुरू कर दी है। देखिए, सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का यानी जो प्लान है वो रूस ने इनका न्यूक्लियर पावर प्लांट बना हुआ है, जिससे इजराइल ये कह रहा है कि हमें खतरा ये है कि तुर्की इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की मदद से न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लेगा। और अगर ये सूरत हाल होती है तो तुर्की सबसे ज़्यादा दुनिया के लिए खतरे वाला मुल्क इसलिए बन जाएगा कि इनके ताल्लुकात हैं दाइश के साथ, इनके ताल्लुकात हैं जुलानी ग्रुप्स के साथ, अलकायदा के साथ, ये वो सब के साथ है। तो लिहाजा तुर्की को हमने किसी सूरत नहीं छोड़ना। अब वो प्लान क्या कर रहे हैं? प्लान अब वो ये कर रहे हैं कि तुर्की के पावर प्लांट पर हमला किया जाए और पावर प्लांट पर हमला करके F-35 का इस्तेमाल किया जाए। तुर्की के पास ज़्यादा से ज़्यादा F-16 है, तो लिहाजा वो ये रोक नहीं सकते। और इस सूरत हाल के अंदर ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि तुर्की के पास जो सिस्टम है उसमें किसी तरह की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इजराइल का हमला रोक सके। और इसमें बड़ी डेवलपमेंट है, ना नेटो ममालिक उसको बचाने के लिए आएंगे, ना कोई और मुल्क उसको बचाने के लिए आएगा। और सबसे बढ़कर जो सूरत हाल है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा क्लियर पैगाम जो दिया गया है कि तुर्की का मिलिट्री ऑपरेशन रोकें, तो उसमें ट्रंप ने ये कहा है कि तुर्की इस वक्त इनिशियल बयान दिया है कि ये मामला ठीक नहीं है और तुर्की ये काम ना करे। अब सबसे बढ़कर मामला ये है कि अब लड़ाई क्या होगी। अब ज़रा सिनेरियो आपने समझना है क्या होगा। देखिए, इसराइल और याद रखिएगा अमेरिका मुकम्मल तौर पर बैक करेगा कुर्दों को। ये तुर्की के खिलाफ जंग जब शुरू होगी तो ये बढ़ते 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 इस लेवल तक जाएगी कि इनका अगला प्लान होगा कि यहाँ से शाम में लड़ाई के बाद हम उसके बाद तुर्की में दाखिल हो जाए। उसके बाद इजराइल इनके पावर प्लांट पर हमला करे, वो तुर्की के खिलाफ जाए, उसको नेटो से निकाले। फिर ये जो जुलानी ये वो सारे हैं, इनके अंदर डिवीजन पैदा हो जाए, यानी पूरी तरह शाम में डिवीजन पैदा हो जाए और ये सारी की सारी जो लड़ाई है वो तुर्की के खिलाफ हो जाए। अब तुर्की के खिलाफ ये जब जंग छिड़ी जाएगी तो आप बताइए कि शाम के अंदर वो जो इलाके हैं वो कौन बचाएगा इसराइल से? कोई भी नहीं बचाएगा, क्योंकि रूस तो यहाँ पर है और रूस के साथ साथ आपको पता है कि बाकी ताकतें भी नहीं है यहाँ पर। तो देन फिर अगला लेवल क्या होगा? अब जब ये बाकी ताकतें नहीं हैं तो फिर इजराइल करेगा क्या कि वो आहिस्ता आहिस्ता इन इलाकों को फतह करता जाएगा। फिर ये जो वेव होगी वो दाखिल करेगा उर्दन में, मिस्र में दाखिल करेगा। मिस्र के बाद उर्दन के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता तुर्की के अंदर भी वेव दाखिल होगी। अब अगला प्लान ये होगा कि तुर्की के ऊपर लगाई जाए पाबंदी। एक तो वो कुर्दों को मार रहे हैं, दूसरा वो दहशतगर्दों के साथ है, ये फलाना है, उन पर पाबंदियाँ माशी तौर पर लगाई जाए, अवाम उनकी हो खिलाफ, तो वहाँ पर भी हम इस वेव को लेकर जाएँ। अब आप ज़रा गौर करेंगे तो सारे सिनेरियो को कि इजराइल ने और तुर्की ने मिलकर प्लान बनाया कि हम यहाँ से ईरान को निकालते हैं, रूस को निकालते हैं और फिर मैं कुर्दों को मारूंगा और तुम भी अपने इलाके ले लेना। अब असल में ये ट्रैप था, ये अब सही मायनों में तुर्की इतना बुरा ट्रैप है, इसमें फंस गया है इतनी बुरी तरह कि ये जो कुर्दों के खिलाफ, देखिए इतना बड़ा प्रोविंस उनके पास है, इतना बड़ा सूबा, उनके पास इतनी ताकत है, तुर्की चाह कर भी उनके खिलाफ लड़ाई नहीं कर सकता। यानी वो आप जीत ही नहीं सकते, कोई मामला ही नहीं है, इसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब इराक से जो कुर्द हैं, दूसरी जगह से, वो सारे अब एक प्लेटफॉर्म पर आकर तुर्की के खिलाफ लड़ाई करेंगे। अब आप बताइए कि सारी सूरत हाल को इजराइल जाने देगा? इजराइल इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ेगा? किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। उसने इस्तांबुल तक जाना है, अंतोलिया तक जाना है और बढ़ते बढ़ते अब सबसे बड़ा मामला ये होगा कि शाम को लेता जाएगा, गजा को तबाह करता जाएगा। और एक बात आप जेब में रखिएगा, जो पायलट्स की कमी है, जब 2014-15 के बाद तुर्की के अंदर क्राइसिस पैदा हुआ, ख़ास तौर पर जब फौज उनकी आ गई थी सड़कों पर, तो उस वक्त एयरफोर्स की बड़ी तादाद के अंदर ख़ास तौर पर उनके जो पायलट्स थे वो भी उसमें शामिल थे, तो उनको उन्होंने जेलों में भेजे। तो आज तक उनके पास उस पायलट्स की जो कमी है वो पूरी नहीं हो पाई। तो पायलट्स भी उनके पास नहीं है, उस लेवल पर तुर्की का था। तुर्की क्यों था नेटो के अंदर? इसलिए था ना मुझे बचाया जाए, वो चाह रहे थे कि हमने यूरोपीय यूनियन में शामिल किया जाए। स्वीडन को उन्होंने क्यों एंट्री दिलवाई? तो इस सूरत हाल के अंदर अब सबसे बड़ा जो तकलीफ के मरहला शुरू होने वाला है वह है तुर्की के साथ। देखिए, किसी इस्लामिक फौज ने जाना नहीं है मदद करने के लिए, जो गजा में नहीं गए वो यहाँ पर मदद करने के लिए जाएंगे, किसी ने नहीं मदद करनी। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर बड़े पैमाने पर शाम में जो अब तबाही होने वाली है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये जो तबाही है ये असल में तुर्की को ले डूबेगी।
तुर्की की जो पोजीशन है वो इस वक्त शदीद वीक हो चुकी है, इतनी ज़्यादा तुर्की की पोजीशन वीक हो चुकी है कि अब तुर्की के पास करने के लिए कोई सूरत हाल नहीं है। वो समझ रहे हैं कि हम जाएंगे, ऑपरेशन करेंगे, काम हो जाएगा बड़े पैमाने पर। रूस अब इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहा है? देखिए, रूस देख रहा है इस सारे मामले पर कि तुर्की को मुकम्मल तौर पर भाग दर मारने की तैयारी है। अगर तो एर्दोगान में थोड़ी सी भी समझ हुई तो फिर उसमें वो ये काम कर सकता है कि वो रूस को कहे कि ठीक है, तुम अपनी मिलिट्री बेसिस यहाँ पर रखो, तुम अपनी फौज यहाँ पर रखो और मेरी मदद करो। जबकि जो हालात नज़र आ रहे हैं इस वक्त, वो रूस और तुर्की के दरमियान शदीद इस वक्त इख्तलाफात पाए जा रहे हैं और ये इतने ख़तरनाक इख्तलाफात हैं कि अब आप ये सोचें कि किस तरह शिकंजे में आ जाता है इजराइल के तुर्की वो आ गया। देखिए, ये लोग ना तो गजा में मदद करने के लिए गए, ना इन्होंने फ़लस्तीन में मदद की। शाम के अंदर जो हुआ वो एर्दोगान की फतह नहीं थी, वो इजराइल की फतह है। इजराइल ने सिर्फ तुर्की को इस्तेमाल किया है और मामला देखिए उनकी राह का कांटा चला गया। वो यहाँ से लिबनान के साथ ही मामला करने वाले, वो आपको पता है कि फिर जो ख़ास तौर पर गजा का मामला है, अभी जो डील हो रही है, आपको पता है कि हिजबुल्लाह ने पहले ये कहा था कि हम डील नहीं करेंगे, फिर उन्होंने भी डील की। फिर उसके बाद आपको पता है कि हमास ने कहा था हम डील नहीं करेंगे, वो भी अब डील करेंगे। और डील क्या करेंगे? उन्होंने कहा था पहले पूरी जंग बंदी होगी, अभी फिलहाल उन्होंने कहा कैदियों का तबादला। जो पे कल कहा है कि 30 जनवरी है हमास के पास आखिरी दिन, मेरे हलफ उठाने से पहले अगर तो कैदी वापस ना हो तो मैं जहन्नुम बना दूँगा हमास के लिए ज़िंदगी। और फिर जहन्नुम के अंदर ये दाखिल होंगे, यानी वो इस तरह की धमकी लगा रहे हैं। उधर से वो इसराइल को भी कह रहा है। लेकिन जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो अब तुर्की फंसने के लिए जा रहा है। तुर्की को बज़ाहिर उन्होंने, देखिए एर्दोगान ने पीछे नहीं, जो ऑपरेशन ये करना है और बड़े पैमाने पर करना है। अगर उसने सारा खेल ना करना होता तो ये गुलामी के लिए वही सारा काम ना होता। ये बात आप जेल में रखिएगा। फौज को शाम की मुकम्मल तौर पर खरीदा, बाई किया, उसको तोड़ा तुर्की और इसराइल ने मिलकर। अब यहाँ पर तुर्की और इसराइल की आपस में लड़ाई होगी। अब आप 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या इसराइल चूकेगा तुर्की के पावर प्लांट को तबाह करने से? कभी भी नहीं चूकेगा। तो अब एर्दोगान यहाँ पर एंट्री लेगा, वहाँ से लड़ाई करेंगे, पाबंदियाँ लगाएंगे। असल में एर्दोगान ने फ्यूचर का देखा नहीं। एक मार होती है सिर्फ अमेरिका की पाबंदियों की, आपकी मैशत ज़मीन में चली जाती, कब्र में चली जाती। और ट्रम्प तो ऑलरेडी कह चुका है कि एर्दोगान के साथ जो मामला था वो काफ़ी ख़राब है, अनफ्रेंडली है और इसमें किसी तरह का कोई मामला नहीं। सो अब कुछ टाइम की बात है, उसके बाद आप देखेंगे कैसे जो लड़ाई है वो रज़ा वाली जो है बिल्कुल एग्जैक्टली वही पैटर्न सब कुछ आपको तुर्की के खिलाफ इसराइल और अमेरिका करते नजर आएगा।
ऐसा है ना, पहले कह रहे थे 920, अब कह रहे 930। हाँ ये पोर्शन रेड है, यही मेजर है थोड़ा सा, वो मिलेजवेल के पास है और थोड़ा सा हाँ जी सैवेज के पास। यार मैं ना एक मिस्टेक किया, जब वो गाड़ी ने एक्चुअली वो डिसीजन लिया था कि टोल वाली लेन में जाने का, तो उसको पता नहीं था कि टोल वाली लेन शोल्डर नहीं है। मैंने उसको अगर वहीं से टोल वाली लेन में जाने देता ना चेंज करके, तो हम इस वक्त डीसी क्रॉस कर चुके होना था। ये ऑलरेडी ने सारी ट्रैफिक रोकी हुई है। एक स्टोरी सुना रहे हैं। ओके, ये जो बुक नहीं है, जिस आदमी ने जॉन लेनन को शूट नहीं किया था, आप उस वक्त जिंदा थे, और उसने ये बुक पढ़ के कहा था कि इस बुक ने मुझे इंस्पायर किया। 2 शूटिंग ऐसे हुए हैं इस बुक की वजह से। जिस ऑथर ने लिखा है उसने ये बुक लिख के कोई और जिंदगी में बुक नहीं लिखा बात। फिर जब ये रिलीज हुआ तो बहुत पॉपुलर था 50s के अंदर। हाँ, अब हर टीनेजर अमेरिका के अंदर पढ़ता। भी कॉपी करी है। कैसे टूट के गिर गया नीचे, ये गाड़ी के अंदर से। कहाँ से? ये वाला डोर ओपन होता है तो उसका जो है लैच है, तो ये उसके ऊपर लगा हुआ था। ये कैसे टूट गया? तो लोग देखो तो उसी कैसे टूटा। खा जाएगा या किस चीज के साथ? कोई डैमेज नहीं है, ना अंदर ना बाहर। चीप बनाया है लगता तो यही है कि वेटलेस है, लेकिन वेट है इसका थोड़ा सा। हाँ, मेटल का ही बनता है। हाँ, मेटल है। और इसकी वजह से गाड़ी इधर से ना, ये वाला जो उसका डोर है, उसका जो सेंसर अननेसेसरी मैं देखता हूँ कि वो क्या कहते हैं, लुक अराउंड करता है मिसिंग पीस। इसमें कोई ना कोई सेंसर है समवेयर। इसमें नहीं है कोई कैमरा जैसा कुछ नहीं इसमें। It's sensor. Some small chip somewhere. तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको खुद ही ग्लू करके वापस भी लगा हैं। उनके पास लेके जाऊँगा, उन्होंने $200 भी बना देना, 195 पर आवर लेबर। सीट लटा के ना आँखें बंद कर लो, ज़्यादा अच्छा है। हाँ, 40 मिनट्स हैं अभी, इट्स प्लेंटी ऑफ टाइम आपको। ये जो मॉर्निंग का है ना, अर्ली मॉर्निंग उठे होने का फटीग, वो फील नहीं होगी।
डिक्लाइन कर जी शहबाज ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਤਾ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਦੀ ਬੈਲਟਵੇ ਤੋਂ ਆਫ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ 95 ਚੜਨਾ ਪਿਆ ਮਹਦ ਦਾ ਸਕੂਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 33 ਮੀਲ ਅੱਛਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹਾਂ 40 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਮੈਂ ਨਵੀਦ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫੋਨ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਲੌਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਭ ਖਾਲੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਿੰਟ ਚ ਸਵੇਰ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਜੰਪ ਦੇ ਦੀਆਂ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਮਹਦ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੀ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਹੈ ਕੁਇਕਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੱਸ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਹੀ 8 ਵਜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ
ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ यानी कि 4 घंटे 3.5 दिन मैं बसा नहीं गुजारदी यार राती मेरे को गलती हुई है कि मैं वो लाल गड्डी छोटी धन दे दिंदा राती मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਗਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਸੁਬਾ ਆਹੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚਾਹੀਏਗਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਗੱਡੀ ਛੋਟੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਮਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ ਰੋਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਲ ਗੱਡੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਮੇਨ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਛੋਟੀ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਛੋਟੀ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਲਵੋ ਨਾ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਰਾਤੀ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਲਾਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਇਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਮਹਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਾਪਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਧਾਈ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਆਏਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਨੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਈ ਸੀ ਨੀਅਤ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸੀ ਆਫ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੈ 9:30 ਤੱਕ ਨਾ ਆਗੇ 9 ਵਜੇ ਨਾਲ ਆਗੇ ਉਹ 9:30 ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੀ DC ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟਵੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜੰਪ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟ ਰਵੇ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲਾਈਟ ਦਾ ਔਨ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਟਾਰਟ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਜੰਪ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਗਰ ਆਓ ਜਾਓ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਯਾਨੀ 1-2 ਸਲਫ ਲਿਆ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸਲਮ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਰਦੀ ਇੱਕਦਮ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਇੱਕਦਮ ਆਵੇ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੈਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਟੈਸਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਐਂਥਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੇਖ ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦਸੰਬਰ 31 ਤੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਆਫਰ ਲਾਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋਬ ਤੋਂ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ 6000 ਤਕਰੀਬਨ ਡਾਊਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਰ ਲਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕਿ which location I can see you today ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੇਲਸ ਟੀਮ ਉਹ ਕੈਨ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਟੂਡੇ ਐਟ ਯੂਰ ਪਲੇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੋ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਛੱਡੋਗੇ ਸਕੂਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਅੱਲੀ ਟਾਈਮ ਆਫ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਓਕੇ।
Elisa says, "Hi Edges, I will follow up with ownership and provide an update this week. Thanks." I am expecting a good news and working relationships.
हाँ जी पहुंच गया महा स्कूल पहुंचने वाला 8 मिनट रह गए ने कोई गल नहीं मेरी टीचर दा रिस्पांस आया सी नो वरीज ते इनको के जिन भी ਅਸੀਂ ईमेल ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋर्ट दे दे के आई एम एंटर ओके ठीक महल मैंने आपको कॉल किया नहीं मिल रही थी हाँ वो अभी मैं चुकने वाला था आपने कट कर दिया था ओह सॉरी अमला आ गया वो अभी पायलट वगैरह आए हैं अंदर चले गए जहाज के 9 लगने लगी है बस उन्होंने कहा 5 से 10 मिनट में लगाएंगे ओके तो आप हेड से जाओ जिसको भी बताया है दास से एक दफा हेलो हाय कर लेना उसको कह देना कि आई एम इन तो उनको पता चल जाएगा ठीक है चलो ध्यान से जाना इंशाल्लाह एहतियात से जाऊंगी मामू हुसैन का फोन आया था वो मेरे साथ जिद कर रहा है कि मैं इसको जुम्मे वाले दिन या हफ्ते वाले दिन लेने के लिए जा रहा हूँ मैंने कहा नहीं वो अपने बाबा के साथ रहेगा आई थिंक बेटर है कि बाबा के साथ रहो हाँ देखो तो सही आपको वीकेंड तक असली ट्रैवल करिए मेरी बात सुनो मैं उनको कह रही थी कि ऐसा नहीं करो बाबा माइंड करेंगे क्यों मामू आए लेके जाए फिर मैंने कहा अच्छा मैं कहूंगी वहां से ऐसे करके मैंने उनका दिल रखने के लिए मैं फॉर्मल बातें करती हूँ ना आपको पता है मैंने उनका दिल रखने के लिए कह दिया लेकिन आई थिंक आप बड़े हो आप बाबा के साथ स्टे करो आपको जो चाहिए आपको अपने बाबा को समझने का मौका मिलेगा देखो हर चीज कुछ लोग कपल्स होते हैं दोनों कवर कर लेते हैं कुछ एक कवर कर लेता है इस तरह आपको अपने बाबा के साथ रह के ज्यादा बाबा का मौका मिलेगा उनको समझने का उनकी पर्सनैलिटी का उनके उठने बैठने का ये नहीं कि मैं बैड इम्पैक्ट में कह रही हूँ और फादर और बेटे की अच्छी दोस्ती होती है ऐसे ओके ठीक है देखो ये आप जहाँ से ये गलत लगे इनसे बात करो जहाँ से अच्छे लगे इनकी तारीफ करो ऐसे यही होता है कम्युनिकेशन में क्योंकि मामा बाबा जैसा कोई भी नहीं होता ये याद रखना जब दोनों होते हैं ना हम चॉइस करते हैं मामा अच्छी है बाबा अच्छे हैं जब दोनों में से एक रह जाता है ना चॉइस खत्म हो जाती है फिर जब दोनों नहीं ना होते तो फिर तो चॉइस का सवाल ही नहीं पैदा होता इसलिए जब वो होते हैं ना तब उनकी कदर करते हैं ओके ठीक है नहीं रोया बेकारी नहीं दुहा ने वो दुहा ने तन बहुत याद किया है कहेंगे मैं एयरपोर्ट ते सब तो ज्यादा महद में एंजॉय करने का She's like a puppy. दुहा या मामा ने रोया की है तो मामा ने साथ ही वादा तोड़ दिया जो बनाया था थोड़ा मामा के साथ वादा करूंगा ही नहीं आप इसके साथ बोल रहे थे आपने योने शुरू किया आप कह रहे हो झूठ पर अच्छा मामा मुझे बता रही थी आप झूठ पर अच्छा आप अभी खेल लिया कर रहे हो बताओ ना नहीं मैं बस अभी आपने क्या किया गलत गेट कैसे फाइंड किया बताओ जरा भाई तो हमने मामा एक दी जाने वाली थी लेकिन हमने दी नहीं जाना था और फिर मैंने उसको दिखाया कि दे जाना वहाँ ट्रेन मिस होने वाला था मैंने ट्रेन का बच गई फिर हम आ गए हम अभी कोई रेस्टोरेंट में कुछ खाए और हम टेबल के ऊपर बैठ के बस आराम कर रहे हैं अच्छा मौज की हम भी सारी फ्रोयो और बबल टी और बोबा हम इतना फन करेंगे आपको हम लोग ऐसे फोटो उतार के फेसबुक पे लगाएंगे आप देखोगे ना तो आप फिर वो हमें कहोगे कि आई विश आई वाज देयर चलो जाना हाशर समद के साथ खेलना हाँ लेकिन अभी 2 दिन में आ जाऊंगी ना उनका घर 2 दिन कहाँ से 13 घंटे जाना है 8 घंटे सफर करना है फिर 3 घंटे और आगे से जाना 1 दिन नहीं हुआ नहीं मैंने उनका 2 घंटे में आना मामा ने कहा अच्छा 2 घंटे में आना तो 2 दिन अच्छा जो भी आप कहते हो स्कूल आ गया नहीं अभी 4 मिनट्स हैं अभी जा रहे हैं पापा को कर आने फेस टाइम करना है तो पापा आपको थोड़ी देर बाहर वेट कर ले कि चले जाए
पापा आपके थोड़ी देर बाहर वेट करने चले गए। मैं इतना काबिल हूँ कि मैं बिल्डिंग के अंदर तक वॉक कर सकूँ। बेटा चला जाएगा ना, उनको चला जाएगा, मेरा वेट करने का क्या तुक है। हाय एवरग्रीन रोड आ गया, अब अगले 5 मिनट तेरी फंसा। नहीं फंसेंगे क्योंकि अब वो रश का टाइमिंग गुजर गया ना 9:30। फेस टाइम करना। क्या फेस टाइम करना नहीं कर सकते ना, स्कूल आ गया। ओके मेरा बेटा जा, है से जो मैंने कहा वो लाजम करें। डैश को भी हेलो हाई कर दें, उसको भी कर दी। बाबा को कहता है तो 5 मिनट नहीं तो उनको भी मैसेज कर दें तो बाबा यू गुड टू गो ना। ओके मेरा बेटा अपना ख्याल रखिए। अभी मुझे मामू काशिफ और मामी नाजिश का फोन आया था। अच्छा क्या कहते हैं? कहती है मैं और काशिफा आपका बाहर वेट करेंगे बाजी। काशिफा के बिल्कुल ऑफिस से 5 मिनट दूर होंगी आप ना, आपने कहीं नहीं जाना, उधर ही खड़े रहना, हम आएंगे। ओके हाँ लेकिन मेरी एक बात याद रखना, लास्ट टाइम भी वो दरवाजा कोई और टर्मिनल कोई और, तो आपके पास विंडो टाइम बहुत शॉर्ट है। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ कही है लेकिन वो कहता अपनी अब्बू ने कन्वीनियंस देखा ना, जितनी देर में आप लोगों ने बाथरूम वगैरह ऑफ बोर्ड होना है और दोबारा जो सिक्योरिटी से गुजरना है। दुबई का एयरपोर्ट बहुत क्विक है, वो मुझे मेरी गल सुनो ना, वो कहता तेरी PIA सी ठीक है, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ PIA ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਐਮਿਨੇਟ ਮੈਂ ਐਮਿਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕੱਲ 6 ਘੰਟੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਖਾਦਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ तुम अपना फोन अपना नंबर अपना कांटेक्ट वगैरह भेजा कि VPN लगे थे WhatsApp मैसेज वगैरह तुम कर सकती हो, वो कहता कोई जरूरत नहीं है, मैं ट्रैकर लाता अपने फोन पे, मैं सुबह 8 बजे कम पे होना, 8:15 ਤੇ ਤੂੰ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇਧਰ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਤੂੰ ਨਾ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਿਰੇਟਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਿਸ਼ ਆਵਾਂਗੀ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਤੇ ਭੈਣ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੇ ਓਵਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਕੱਲੀ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ 4-5 ਘੰਟੇ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਹੁੰਦੇ और रोटी खा के लगाना। हाँ चलो आई मीन वो अच्छा ही होएगा। और की ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੂੰ 9 ਸਾਲ ਮਹਾ ਜਾ ਹੈ ਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। चलो 2 मिनट चलो उसको जरा पुश करके बांध देना मैं बेटा है। मैंने की पता नहीं थी क्या बता दे जल्दी जल्दी थी। अच्छा तो जाओ फिर अकेला, फिर भाई तो जाओ अकेला, फिर ट्रंक से निकालना बैग, उसको जरा पुश करना मेरा बेटा ध्यान से ना। ओके अल्लाह दिस जा है ना चला गया गड्डी तो बाहर। हाँ वो लैंड नहीं हले बनवाई ने, अमला चला गया है अंदर, ਉਹ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੁਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੀ, ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਫਿਨ ਲੱਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪੀਟਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੈਟੋਰੇਟ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੀਂਦੀ ਪਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸਾਂ ਦੁਆ 2-4 ਬੋਤਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਫੜ ਹੀ ਲੈਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਤੇ ਜਗਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮਫਿਨ ਅੱਧਾ ਖਾਦਾ ਸੋ ਤੇ ਅੱਧੀ ਗੈਟੋਰੇਟ ਕੀਤੀ ਸੋ, ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਫੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਸ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਮੋੜ ਹੈ ਟਾਈਮ, 9:45 ਤੇ ਖੋਲਾਂ। ਸੌਰੀ ਹਾਂ 9:45 ਤੇ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਅੰਦਰ नहीं, ये साइड वाला जरा हैगी है की कहते हैं दोवां बिल्डिंगां दे जेड़ा दरमियानी एंट्रेंस हैगी है उथों जाए। चलो उथों क्या हो गया? हां जी अंदर चला गया बिल्डिंग में। हां जी की हो गया? चलो अल्लाह के शुक्र है, अल्लाह दे हवाले की अमान अल्लाह। वही बाहुज़मा दा फोन सी, हुज़मा भी नहीं कश भाई ठीक कह रहे हैं, मैं क्या मैं देखूंगी, सादिया बाजी आपने नहीं देखना,
ये सपोर्ट होती है, आपको नहीं पता, आप जो ट्रैवल कर रही हो ना, हमें पता है वो कितना पेनफुल होता है। मैं क्या अच्छा पढ़ावा, अच्छा कहती वो बाजी, वो कहते हैं बच्चों को छोड़ के ना, वैसे तो बस जाती ओके लाइन अप हो जाके हम जाके ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਮਿਰੇਟਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਰਮੀਨਲ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਐਮਿਰੇਟਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਾਰਡਲੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 에어ਪੋਰਟਾਂ ਤੇ, ਰੋਡ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਪਛਤਾਨੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਾਸ਼ੀ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਜੀ ਦੇ ਫੋਨ ਹੀ ਮੈਂ ਲਈ ਆਂਦੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੈਰ ਕੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ 9 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮਹਦ ਤੇ ਦੂਹਾ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਹੀ ਅਗਸਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 9 ਘੰਟੇ ਚ ਕੀ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਸਮਾਨ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾ ਦਾਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੁਣ ਨਾ। ਚਲੋ ਜਾਓ ਖੈਰ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਫੋਨ 에ਅਰਪਲੇਨ ਮੋਡ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਸ਼ੰਬਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਧਰੋਂ ਮਿਲੇ ਪਾਸਵਰਡ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਸ ਦੇਖਾਂਗੀ ਜਾ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕਸਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ ਹੈ ਨਾ ਘਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਚਾਬੀਆਂ ਚੁਬੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੇਲ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ ਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਹਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ उधर ना, कहना फिर अपनी अपनी चाबियां, मैंने कहा मैंने क्या करनी है, आप घर में आपको चाहिए लॉक करना आना जाना, फिर अंदर बर्तन ना रखना सिंक च बड़े कीड़े हो जाते। चलो लाइन अप करते पे ने, हाले वैसे बिजनेस क्लास तो फर्स्ट क्लास में क्या करी थी आप खलो हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲਾ ਜਾ ਹਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰੇਗਾ, फाइट करते पे ना बड़ी उस दिन माफी कर लगे मैं बंद किया ते ओ काशी ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਸ਼ੀ ਚੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਡ ਨਾ ਬੈਠ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੰਮਾ ਟਰੈਵਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਘਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਾਥ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ, ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਜਦ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਲੇਗੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਟਾਈਮਲੀ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਥੋਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਲਾ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ 9-10 ਵਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨਾ ਆਵਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਈਆਂ ਨਾ ਵਾਪਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣਾ ਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਹੋਏ ਤੇ 4-5 ਲੰਬੇ ਹੋਏ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾਇਆ ਬਹਿ ਲਿਆ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕਾਸ਼ੀ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫ੍ਰੀ ਵਾਈਫਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਡੇਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਤੇ ਅਗਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਟਰਸਟਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਦਰ ਔਰ ਹਾਈਟ ਔਰ ਐਡੀ ਸਰਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਨ ਫਲਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜੋਗੇ ਨਾ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਵਾਈਫਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੀ ਬਸ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢੇ ਮੇਰਾ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਫਲਾਈਟ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਈ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਕਰਾਚੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਤ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਡੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈਗੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਈ ਮੈਂ ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸਾਂ ਤੇ ਰੋਣੀ ਪਈ ਨਾ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਸਟਾਪ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਰਾਚੀ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਲੀ ਫੈਸਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸਪਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜੋਬਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਯਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ बुटीक खड़ी हुई है पढ़ाना हेल्प कर असिस्टेंट चलो बाहर हाल प्री बोर्डिंग शुरू हो गई है बाकी हाल देखो की मैं तो शबाज ਨਾਲ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਚਾਸ਼ਾ ਪੀ ਲਾਂਗਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਨਵੀਦ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਹੋ ਹੁਣ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈਗੀ ਏ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜੇਗਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਫਿਰ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜ਼ੋਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ 5 and under तो अभी भी बैठे रहो कोई बात ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ 500 ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਫਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਐਂਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਤੋਂ 2 ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ 380 ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹ 380 ਹੈ ਨਾ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈਏ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਸੀਟ on 500 people ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੌਲੀਡੇ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੌਲੀਡੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵਰਤ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਈਏ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀ ਲਈਏ ਆਲੂ ਖਾ ਲਈਏ ਫਲਾਣਾ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਲੰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਮੀਰੇਟਸ ਹੋ ਗਈ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉਤਰਾਂਗੇ ਅੱਗੋਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਹੈਂਡ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨਾ ਸੀ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਸਵਿਸ ਵੇਖ ਲਾਣੀ ਹੈ ਮਿਲਾਨ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕੂੰ ਸਾਥ ਹਾਂ ਚਲੋ ਇਜਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਜਾਓ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਪਰ ਹਾਲ ਤੇ मेरे छोटे मोटे मुन्ने का भी ख्याल रखना है कोई गल नहीं मैं अंदर मैं इजाज़ हम थोड़ी कंपनी देना मैं ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ
हाँ मैंने बचपन में चुप कर देना सोचा हमारे मन क्या मैंने देख लिया 121 की फ्राइडे की नाइट की 5:40 की मैं क्या नहीं पागला हाँ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਏ ਤੇ ਸਾਥ ਖੇਲੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਥ ਖੇਲੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਖੇਲੇ ਗੇਮਸ ਖੇਲੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਸੈਟਰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ चलो जो करोगे बेहतर ही करोगे तो मैं कहता सादिया बाजी कहती है ना मैं चला जाता हूँ मैं नाइट बिफोर चला जाता हूँ लेके तो आ जाता हूँ मैं क्या मेरा बाल मेरी बात सुन बुक शुक करने की कोई जरूरत नहीं कहना मुझे खुशी होगी अगर मैं आपकी इस टाइम पे हेल्प करूँ इसका बहुत सवाब है मैं क्या तेरी जो हेल्प करती है ना अल्लाह ताला तेनू राज़ी करेगा हाँ जी बस और मुझे कहना मैं आई थिंक रहने सो और सुबह स्कूल 5 बजे आएगा 2 घंटे सो जाएगा फिर स्कूल 4 दिन मैं क्या बड़े अच्छे लग जाने और तारे को मैं प्लेंटी ऑफ फूड आज दूसरा दिन तो हो भी गया है हाँ मैं ओ यस मैं क्या प्लेंटी ऑफ फूड है तारे को इतना फूड है कि मैं वहां पे क्या हलवा जो तानू है ना गरम करो शेयर करो खा केक खा लेना काट के पाइनएप्पल में राती ना नहीं नो देन लगी सा फिर मेरे दिल से आया अब कटना बड़ा औखा होता है ना कुछ कटिया नहीं चाहिए कच्चा आ गया हाले अगर पकेगा तो फिर कटिया जाएगा तो मैं कैसी दे नहीं तो नहीं तो पापा ने कोई तन कट के देंगे खा लेना तो तो होर जो दिल करता अपनी मर्जी ना लिया चलो ओके अल्लाह दे स्कूल अल्लाह हाफिज़ अंदरों मैसेज करांगी चलो जाओ जरूरत पई ते अपने घर गड्डी खलोती है यूज करना आप ही कोई गल नहीं ओके देखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़